अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नवीद वड़ाइच। आज आपकी खिदमत में हम हाज़िर हैं वैनकूवर से 103 किलोमीटर के फासले पर एक खूबसूरत शहर चिलिवैक। वहाँ से हम आपके सामने ये प्रोग्राम लेके आए हैं। नाज़रीन, यहाँ पे एक एसोसिएशन काइंडनेस चेन के नाम से बनी है, जिसमें बेशतर लोग जो हैं वो हमारे पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं और ये मेन स्ट्रीम के साथ मिलके बहुत सारे काम करते हैं। और आज भी इन्होंने एक कैंप लगाया है जिस पे हम ख़ुसूसी तौर पे हमने शिरकत की है ताकि देखें कि ये ग्राउंड लेवल पे हमारी कम्युनिटी कैसे काम कर रही है। मेन स्ट्रीम में ये अपना रोल बहुत ही उम्दा तरीके से निभा रहे हैं और आज इन्होंने यहाँ पे चिलिवैक के जो स्ट्रीट्स हैं उनको उनकी क्लीनअप का ज़ुम्मा लिया था और आज हमारा कैमरा इनके साथ चिलिवैक की स्ट्रीट्स पे इनको फॉलो करता रहा और हम देखते रहे कि ये किस तरीके से नौजवान और आप समझ लें हर एज के जो लोग हैं वो साथ मिलके उन्होंने 3-4 ग्रुप्स बनाए हुए थे और मुख्तलिफ स्ट्रीट्स पे ये घूम कर इन्होंने स्ट्रीट को क्लीन अप करने का फरीज़ा सर अंजाम दिया। और जब हम गुज़र रहे थे इनके साथ, इनको फॉलो कर रहे थे, तो बहुत सारे लोग जो चल रहे थे साथ इनके और जो साथ में वॉक कर रहे थे, उन्होंने इनको बहुत अप्रिशिएट किया। एक कम्युनिटी जो है वो इनको अप्रिशिएट कर रही है। इनका काम ग्राउंड लेवल पे बहुत ही जो है वो हाईलाइट हो रहा है और ये जो एसोसिएशन है इसने थोड़े ही दिनों में बहुत सारा अपना नाम पैदा कर लिया है और हम बहुत प्राउड फील करते हैं इनके वॉलंटियर्स के ऊपर। ये सारे ही अपना टाइम निकाल कर बाहर आते हैं और मुख्तलिफ जो काम है कम्युनिटी के साथ जो मुतल्लिका काम है वो करते हैं, चाहे वो किसी को खाना खिलाना हो, चाहे वो सर्दी ज़्यादा और हीटर प्रोवाइड करने हो, गर्मी ज़्यादा हो और पंखे प्रोवाइड करने हो। ये तमाम लेवल पे जाके एक मेन स्ट्रीम में काम कर रहे हैं और ग्राउंड वर्क कर रहे हैं। इनका बहुत ग्राउंड वर्क है, इसीलिए हम इनको आज हाईलाइट कर रहे हैं, आपके सामने लेके आए हैं। हम इनके प्रेसिडेंट से और इनके कुछ डायरेक्टर से और जो इनके साथ काम कर रहे हैं कुछ वॉलंटियर्स, उनके साथ भी बातचीत करवाएंगे ताकि आपको पता चले कि ये किस पैशन से यहाँ पे काम कर रहे हैं। My name's Manal. I feel good. I'm usually not coming to these events, but it's nice to join when I'm here because I don't live here. But I like helping out when I can. It's just kindness chain, so I think it's just giving back to your community that you live in. So I think it's just about like doing whatever. Like this is like garbage or like a trash cleanup around downtown here. So I think that's just like small things like that helping out. So when I'm here, I like to help out. My name's Risha. I'm here because, well, my dad works with the person who like created this whole thing. So I always come here when my dad's going. So like we do like the cleanups in downtown here and like we clean up the area. I think it's pretty important because the youngsters are like the ones for like the new generation that's coming up. So they should know what they're doing and like take care of the planet in the future. So yeah. My name's Ishal. And I feel good. I'm here because my dad is also good friends with the person who started this association, and I feel like this is a really great way to give back to the community of Chilliwack. But hanging out with friends while doing this too, it adds a fun to it, and you're also helping the community too, cleaning up, making the world, the cities a better place overall. Don't litter. Don't litter. Don't litter. Don't leave your garbage. It isn't a good thing. Yeah, I think if you live in like a big city or small city, like just like help the community you're in, like whatever it is. So clean up, like whatever you can do, anything helps. Today we're standing here. We have seen a lot of young kids. They're coming up and doing a lot of volunteer. You are one of the youngster. How do you feel today? So, just like Manal, I'm usually not here. I'm a university student. I'm also working all the time. So this is the day. It's a stat holiday. So today I'm fortunate enough to be here. But I think it's a really good like step towards the community. You know, we live in this community. We always have to give back to the community, and this is one of the kindest ways we can do that.
when they started this, I wasn't aware of it, but as soon as they started spreading awareness, I actually found out about this whole thing through Facebook. I didn't even find out about them through them. Yeah. Even though it was my dad. Yeah, it was my dad who actually started with the whole. Yeah, it was his and his friends that started the whole thing. But I found out through Facebook, and I was like, oh, this is pretty cool. And then I told my friends about it, and we were all like, oh yeah, this is pretty cool. Yeah, no, definitely. Helping community is not only fun, but it goes a long way. Absolutely, and, yeah. And now I asked this question before. What kind of message you would give it to the youngsters who are watching you and who would like to do such things? Do whatever you can for the community that you live in, just like how everyone else said, because everything counts. Yeah. Every little detail, every small step counts towards the bigger step, which is pretty much giving back to your community. You know, we're so blessed to be living in such a wonderful country, such wonderful cities. Everyone's so kind and nice to you. Not many people have that around the world. Even throughout Canada, there's places, I'm sure, like, you know, not everyone's as kind. So if you show your kindness towards others, I'm sure, like, it will multiply. So Kindness Chain Chilliwack Association also clean up the lakes too. I think it's more interesting. You are surrounded by many lakes. Absolutely, yeah. And then if any of the youngsters is watching and they want to just talk to the Kindness Chain, it would be a great opportunity to go out and watch how beautiful the lakes are going to be like. Yeah. And then you can just go and participate in cleanup. Yeah, and definitely it's going to be a lot more fun. It's really fun, especially when you have more people, because you don't even notice it. You're just having a good time walking around. Whatever you see that's garbage, you put it in the disposable garbage can or garbage bag, and then you take it back. That's it. It's not even hard. It's honestly not hard. One person holds the garbage bag, the other person holds the pliers. Put it in. One of the youngster was just giving me the message that I asked her, "What is your message is going to be to the community?" She said, "Don't litter." Yeah, absolutely. So, yeah. Because you know when you get involved in such things, and then you understand the value of not only the community work, of how important it is to be clean and have the clean. Yeah, you know, area. If you clean everything around you, I'm sure you want to have that self-improvement in your own life too, personal life. Definitely. Thank you so much. One of the angles I come from is media. First off, I operate Fraser Valley News. I'm the news anchor for Chill TV. The other side of it is I'm involved with the Chilliwack Alano Club and a lot of recovery. So when I see Kindness Chain doing this stuff, my heart goes out, because a lot of work has to go into it, helping out not just the community in general and doing things like this, like the cleanup, but also helping out the seniors. It really brings back more of a community, family, neighborhood feel. And to be blunt, the last year and a half with the pandemic, I'm a little concerned that we're kind of distancing ourselves from that family feel. So this is bringing us back together. It is that community thing, and it's so important. Even if it just stills in a mustard seed of doing something for your fellow human being, that's what it's all about. Yeah. I've seen 6-year-old even taking part in cleaning and just going, stepping forward. That's a very, very encouraging to see. How Chilliwack community is looking at this. The thing that and you mentioned the 6-year-old. One of the things I can really relate to is when I was 6, 7, or 8, and this was in the early 1970s, so that means I'm years old. We were starting to understand and learn about pollution. We were starting to learn about dealing with the environment and caring for each other. So now, when we see the 6-year-olds caring about each other and caring about the community, I'll tell you, that fills me with joy. That does my heart good. That really does, yeah. Definitely. And thank you very much, Don, and we appreciate your presence here, and we'll love to see this community grow more and this association do more for the community. The really cool thing about Chilliwack, and this is the second time I've worked and lived in this market. The first time was back in the 90s, and I have seen Chilliwack do some serious growing up. And now that we are a city of over 100,000 people, the one side of it is we have
the challenges of a city of 100,000. You can talk about the crime, and you can talk about Soji, and you can talk about all of that other stuff. The other side of that is watching us grow up and coming together as a city, realizing we can't isolate ourselves anymore. And we're part of the fabric. We're also part of Metro Vancouver, whether we like it or not, although we are the Valley. Okay, we are the Valley. But again, it is watching community come together. Chilliwack's always had that as an underneath feel to it. And I think we got away from it for a little while. And it's groups like Kindness Chain that really bring it back into the forefront. Okay. But this is a grocery delivery program. Okay. So we have our community members who sign up for the delivery, and they just come here to pick up their grocery from us. And they have 5 families. We have 5 addresses, right? 5. Yeah. So they are going to deliver at their home. Okay. So she's Kim. So she's our volunteer. Kim, just briefly tell us. Over here. Come over here. Yeah, just come up. Don't be shy. You guys have a mask on. So just tell us a little bit about you came here and what are you doing here right now? We've just come out to help the community. There's obviously quite a few people in Chilliwack that are in need of groceries and lower income people. So we're just giving back a little bit. And my grandkids wanted to help out, so that's really important too, to give Wonderful. back. It's good to see the young kids coming up, and they're also participating in the community work. How do you feel volunteering for community as a youngster? Well, I want to do more of this in the future, so I think this is a good start. And I hope that we can help everyone in need. Great. And what's your opinion? You're looking young. How old are you? 11 years old. 11-year-old, and you're on the street and volunteering. What are your ambitions? What do you see out of it? What are you aiming for? Help out the people that can't afford Thanksgiving. You're happy to do that? Yeah. Definitely. So the last question from you, this organization, this association, Kindness Chain, how did you find them, and what do you think they're doing for the community, which is making some difference? Okay, well, I've actually followed them for the last month or so because we were looking for a group to get together with. And I was really impressed with what they're doing, whether it's the groceries or just different acts of kindness, cleaning up. I just think it's all very good. Kindness Chain of Chilliwack. I came across them on Facebook, and I've always wanted to give back when I receive. They helped me out when I was in a very rough spot as far as groceries and moving and all that kind of stuff. And I offered my time as a way of giving back for what I'd received, and I've received way more than that. It's a wonderful organization, and if you want to help out somebody, do it here. Definitely. Today I've seen so much work on the ground level, cleaning up the city. It makes us as a community proud to see these kind of events. How do you feel about it? I feel very gratified and grateful that I can participate in something like this, because not everybody can get out, not everybody can do that, but we also give back to those who can't step outside their doors, or they're just not able to. I also seen a lot of different ages. I also seen kids. Even I've seen somebody from 6-year-old actually participating. How do you feel about that? Participating at a young age will help as you get older, when you realize that there's other people out there that have needs. So if we can project out ourselves, then that's a very good thing for our community and for everybody to hear. I've worked with a lot of different charities over the last 6 years, and I'd taken some time off, and then I seen this charity when they were first starting out, and it was just basically the small amount of families at first, and it was enjoyable to see the younger kids coming out, because it's the younger kids that will make our future to come, and for them to join in and see and pitch in at a ground level where the community needs help is quite insightful. Not enough younger people do get into it, and it used to be that it was always a stigma that they're afraid, they don't want to know or see what goes on downtown.
And so, yeah, it's very enjoyable to see. And they are doing amazing work. And the seniors, with the senior stuff that they do, is just amazing. I hear seniors in my building saying, oh, when can we have another barbecue? And so it's amazing to see that they're reaching out to everybody from young to old. Definitely. And when I was talking to some of the volunteers, they have mentioned that social media is playing a very critical role. A lot of people are just getting to know this association and their volunteer work through social media, especially Facebook and stuff. Do you think that is a great tool of connecting with people? You know, in this day and age, everybody's on their phone, so it's all about social media. And so much is read on social media. It's not even on the news anymore. People go to social media because they hear it there first. Yeah, definitely. And I've seen just a lot of youngsters and all ages groups. What is your message is going to be at the end for this association? How far you want to see them growing? I hope they go on a long ways, because as I said, I've been doing this at ground level downtown here for quite a few years, and you see so many come and go, and I really hope that they stay for a long time, because it takes a lot of initiative and a lot of commitment to want to stay and always go. And the people that I see here and the people I've met want to see it go. They wouldn't have started this if they didn't. अभी हमने यंगस्टर से भी बात की और बहुत सारी हमारी फीमेल्स भी इन्वॉल्व हैं. आपको तो हम पहले भी देखते हैं कि आपने काफ़ी काम किया और आप फैमिली के साथ मिलकर भी ये काम कर रही हैं. तो कैसा महसूस हो रहा है आज आपने सिटी ऑफ चिलिवैक को थोड़ा सा और क्लीनर बनाया है, तो कैसा महसूस हो रहा है? वेल नहीं, ये तो बहुत अच्छी बात है कि हम अपने जो कम्युनिटी है उसको हम क्लीन करके उसकी जो वैल्यू है उसको और हम लोग बढ़ा रहे हैं, उसको इम्प्रूव कर रहे हैं यहाँ की इन्वायरमेंट को. तो ये तो इंसान अपने घर को क्लीन करता है, फिर अपने घर के सामने रोड को करता है क्लीन. दिस इज़ आवर होम, हमारा घर है. हमारे चिलिवैक में भी इसको अपना घर ही समझते हैं सारे चिलिवैक को ही. तो इसमें अच्छा है कि बच्चे भी इन्वॉल्व होते हैं, फैमिलीज़ इन्वॉल्व होती हैं. तो उसमें कोई ये बात नहीं कि क्लीन अप है या कुछ है. इट इज़ अ पार्ट ऑफ बीइंग इन द कम्युनिटी और इसका हिस्सा और अपनी जड़ें इधर गढ़ने के लिए आई थिंक कि एनीथिंग जो हम कर सकते हैं इस सिटी के लिए, इस कंट्री के लिए, सारा कुछ बस. अभी मैंने बात कर रहा था एक यंगस्टर से और उसको मैं कह रहा था कि आप लेक्स भी क्लीन करते हैं, मज़े भी आते हैं आपको और आप ये सारा कुछ करते हैं. तो आपके साथ कम्युनिटी काफ़ी जुड़ी हुई है, पाकिस्तानी कम्युनिटी के काफ़ी सारे लोग हैं और मेन स्ट्रीम के काफ़ी सारे लोग हैं. कैसे मोटिवेट करते हैं आप लोग? बस उनको हम लोग एक इनिशिएटिव दे रहे हैं ना कि आप यहाँ पे अगर कुछ करोगे आप अप्रिशिएट होगे. हम लोग जब यहाँ पे क्लीन अप के लिए निकलते हैं रोड्स पे तो उसमें पाकिस्तानी भी होते हैं और बाकी भी डिफरेंट एथनिसिटीज़ के लोग होते हैं और वो सब आते हैं. और जब हम रोड्स पे जाते हैं तो सारे हमें हॉर्न मारते हैं और अप्रिशिएट करते हैं, कोई थम्स अप देता है. तो वो सारे लोग हमें अब आहिस्ता आहिस्ता जान भी गए हैं और सबको पता है कि हम एक पाकिस्तानी कम्युनिटी यहाँ पे कितना ज़्यादा इन्वॉल्व है इस चिलिवैक के अंदर. तो ये उनको हम बताते हैं तो उससे सारे मोटिवेट होते हैं और सारे नई जनरेशन जो है वो सारी इन्वॉल्व हो रही है. तो ये तो अच्छा है. और क्लीन अप्स करते हैं तो फिर हमारे बीच में अपने मीटअप भी होते हैं, फिर हमारे अपने कुछ बारबेक्यूज़ और इवेंट्स और अप्रिशिएशन सीरीज बारबेक्यूज़. तो सारा कुछ काफ़ी अच्छा है और बच्चे सारे काफ़ी इनकरेज होते हैं और आपस में भी मिलते हैं तो आपस में भी बॉन्डिंग होती है और सिटी के साथ भी बॉन्डिंग होती है. ये एक नई सिटी हमने सोचा था जब हम वैनकूवर से आगे दूसरी सिटीज़ में, स्पेशली सरी में जब लोग जो रह रहे हैं तो वो ये समझते थे कि सरी में ही पाकिस्तानी कम्युनिटी है, लेकिन पाकिस्तानी कम्युनिटी यहाँ चिलिवैक तक भी, और बहुत सारे लोग आपको देख के इनकरेज होंगे यहाँ पे आने के लिए. तो ये एक बड़ी अच्छी बात है कि आपने कम्युनिटी को बड़ा अच्छा ग्रुप और अच्छी शक्ल में यहाँ पे प्रेजेंट किया हुआ है. आपके साथ और भी लेडीज़ हैं, घर के काम छोड़ के इस काम में आना कोई डिफ़िकल्ट नहीं है? बस टाइम मैनेजमेंट की बात है. अगर इंसान अपना टाइम मैनेज कर ले और अपने आप को एक चीज़ के लिए डेडिकेट और डिवोट कर ले तो आई थिंक के टाइम निकल आता है. और दूसरी बात ये कि आप कह रहे थे पाकिस्तानी, हमारे कुछ इंडियन फ्रेंड्स भी हैं, वो हमें देख के वो भी इनकरेज हो रहे हैं कि वो कहते हैं तुम लोग इतना अच्छा काम कर रहे हो, हम लोगों ने भी आना है. तो वो आई थिंक ये एक एग्जाम्पल बन रहा है सबके लिए. तो अच्छी बात है. चलें जी, थैंक यू वेरी मच. अब देखते हैं कि आगे क्या होता है. बहुत बहुत शुक्रिया. अस्सलाम वालेकुम नवीद भाई. सबसे पहले तो थैंक यू सो मच फॉर ड्राइविंग ऑल द वे फ्रॉम सरी
जो आज स्पेसिफिक हमारा प्रोग्राम था एक्चुअली जस्ट नॉट क्लीन अप, हमारा ग्रॉसरी डिलीवरी भी साथ ही था और हमारी तकरीबन 50 से 70 फैमिलीज़ हैं जिनको हम ग्रॉसरी डिलीवरी करते हैं। मैं सबसे पहले थैंक्स करना चाहूँगा अपने सब वॉलंटियर्स का, अपने डायरेक्टर्स का और अपने स्पॉन्सर्स का, जिनकी वजह से ये पॉसिबल हुआ है। हमने जब ये स्टार्ट किया था उस वक्त हमारा ऐसा सिचुएशन नहीं थी और विद इन फ्यू 6-7 मंथ्स हमने काफ़ी ग्रो किया है इस ऑर्गेनाइजेशन ने। हमारी जब भी इवेंट्स होते हैं हम उसको एडवर्टाइज़ करते हैं अपने फेसबुक पे, ऑनलाइन जब भी, और लोग उस पर अप्लाई करते हैं और उसके बाद हम डिलीवरीज करते हैं। जहाँ तक आपका क्वेश्चन था कि आज बेसिकली हमने थैंक्स गिविंग के ऊपर एक छोटा सा गेट टुगेदर रखा हुआ था अपनी कम्युनिटी के लिए, ताकि हम लोग आपस में मिल बैठ के गपशप भी लगा सकें और थोड़ा सा साथ क्लीन अप भी कर सकें। दैट वाज द मेन इवेंट और हमने वो किया, आपने कवर भी किया और काफ़ी अच्छा चला। जी अस्सलाम वालेकुम नवीद भाई, पहले तो आपका शुक्रिया कि आप सरी से आए हम लोगों को यहाँ कवर करने। तो बेसिकली ये 7-8 बंदों ने ये प्रोग्राम शुरू किया था कि जिस कम्युनिटी में हम रह रहे हैं उसको कोई गिव बैक करें, कि जो कम्युनिटी से हम इज़्ज़त मिली, मकाम मिला और कनाडा ने हमें एक अच्छा रहने का एटमॉस्फेयर दिया, तो इस कम्युनिटी को पे बैक करना चाहिए हमें। तो हमारा एक ही माटो था वो 7-8 बंदों का, सर्व द कम्युनिटी वी लिव इन। तो 7-8 बंदों ने ये काम शुरू किया और अल्हम्दुलिल्लाह आज ये 100 से भी ज़्यादा हमारे वॉलंटियर्स हैं। और काम हमारा क्या है कि क्लीन अप प्रोग्राम, और आज स्पेशली जो इकट्ठे हुए हैं थैंक्स गिविंग, आपको पता है कि ये चल रहा है वीक थैंक्स गिविंग का, और उसमें हम ये इकट्ठे हुए वॉलंटियर्स के लिए सिर्फ कि क्लीन अप प्रोग्राम किया, फ्री ग्रोसरी थैंक्स गिविंग के हवाले फ्री टर्की डिलीवर की लोगों को, और फिर अपने वॉलंटियर को अप्रिशिएट करने के लिए उनके लिए खाना भी यहाँ पे रखा। साजिद भाई हैं हमारे वॉलंटियर हैं और इनकी वाइफ हमारी डायरेक्टर हैं और पहले दिन से बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है हमारे साथ। देखते हैं ये क्या कहना चाहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम जी, बस यही कहना चाहूँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह जब हम ये काम करते हैं, कम्युनिटी को सर्व करते हैं, चाहे फूड हो या क्लीन अप हो, तो हम प्राउड फील करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा लगता है हमें, हमारे बच्चे भी खुश होते हैं, बच्चे भी पूरा पार्टिसिपेट करते हैं इसमें। तो अल्हम्दुलिल्लाह मज़ा आता, काम अच्छा लगता है ये दूसरों की हेल्प करना। तो जज़ाकल्लाह। उमर फारूकी भाई हमारे डायरेक्टर हैं और पहले दिन से बेइंतहा इन्वॉल्व हैं और सारा कुछ की मेन हमारी काइंड ऑफ अ बैकबोन फॉर अस। थैंक यू। नहीं बैकबोन तो नहीं है, मैं तो ये कहूँगा कि मैं बातें जो रिपीट की हैं वो नहीं करूँगा, क्योंकि जो हमारा पर्पज़ है वो तो सब ने कहा ही है एंड दैट्स आवर गोल। लेकिन इससे हमें फ़ायदा जो हुआ है इसके अलावा वो ये हुआ है कि हम बहुत ज़्यादा इंक्लूसिव हो गए, हम आपस में बहुत ज़्यादा क्लोज़ हो गए, क्योंकि इसकी वजह से हमारा डेली इंटरेक्शन है, हम कम्युनिटी में इन्वॉल्व हो गए कि इतना ही है कि ऐसे सिर्फ ये पाकिस्तानी कम्युनिटी है या इंडियन कम्युनिटी अकेले, हम रेगुलर यहाँ के जो लोकल्स हैं उनसे इंटैक्ट हैं, दे आर पार्ट ऑफ इट। और इसके अलावा भी बहुत सारे इवेंट हैं, तो इसके दोनों फ़ायदे हैं विच इज़ गुड। हम ये सब जो कर रहे हैं इसका जो पर्पज़ था, जैसे कहा है कि सर्व तो कर रहे हैं, लेकिन ये हमारे लिए तो शायद ना हो, हमारे बच्चों के लिए, आगे की जो जनरेशन है, क्योंकि अगर यहाँ फ़ैसला किया है कि यहाँ रहना है तो हमें यहाँ पे इन्वॉल्व होना पड़ेगा, विच इज़ द पर्पज़। और इन्वॉल्व होना पड़ेगा तो इनको भी पता होना चाहिए कि हम लोग व्हाट आर वी अबाउट, हम लोग किस चीज़ से हैं, कहाँ से हैं। ऑब्वियसली हम ये एडवर्टाइज़ नहीं करते कि हम पाकिस्तान से या कहीं से, हम तो कहते हैं कि हम यहाँ रहते हैं, लेकिन जब लोग पूछते हैं तो कहते हैं अच्छा ओह ये लोग ऐसे भी है, तो दैट मेक्स अ डिफरेंस जब वो खुद रियलाइज़ करते हैं कि यू नो ये है। बाकी तो मतलब आप सबने डिस्क्राइब कर ही दिया। थैंक यू। थैंक यू। सफ़ीर भाई हैं हमारे पहले दिन से हमारे साथ बहुत इन्वॉल्व हैं और इनकी वाइफ शी इज़ वन ऑफ आवर डायरेक्टर टू। अस्सलाम वालेकुम। जैसे बाकी भाइयों ने कहा, काइंडनेस चेन का जो मोटो इन्होंने एक्सप्लेन किया, मैं उसके साथ एक चीज़ ऐड करता चलूँगा कि मेजर जो मुझे जो बड़ी चीज़ लगती है और एक फ़ायदा दिखता है कि हमारे बच्चों को ये चीज़ पता चल रही है कि हम जो फ़ी सबीलिल्लाह काम करते हैं अल्लाह की रज़ा के लिए, जो हम एक नेक कदम उठाते हैं उसका कितना फ़ायदा होता है। वो एक इज्तिमाई काम भी होता है, वो कम्युनिटी को की हेल्प भी हो जाती है और अल्लाह भी रज़ा हो जाता है। थैंक यू सो मच। सलमान भाई हैं हमारे डायरेक्टर हैं और पहले दिन से काफ़ी इन्वॉल्व है हमारे साथ हर चीज़ में। अस्सलाम वालेकुम जी, माई सेल्फ सलमान। और बेसिकली हम ये 5-6 लोगों के ज़हन में आइडिया आया था। हम लोग सिर्फ जस्ट वॉकिंग थ्रू अ ट्रेल ऑन वेडर रोड,
तो उस वक्त हमारे ज़हनों में आया कि हम जिस कम्युनिटी में रह रहे हैं वाई वी शुडंट सर्व दैट कम्युनिटी। तो उसी को ज़हन में लेके चलते हुए हम लोगों ने ये अपनी ऑर्गेनाइजेशन KCCA के नाम से स्टार्ट किया। और स्टार्ट जब हम लोगों ने किया है तो हम लोगों के ज़हन में आइडिया यही था कि हमने इसी कम्युनिटी को सर्व करना है। और वो फिर हमने जो होमलेस पीपल है उनको मतलब फूड वगैरह डिस्ट्रीब्यूट करने से हमने स्टार्ट लिया। एंड देन स्टेप बाय स्टेप हमने फिर दूसरे इवेंट्स भी इसमें और ऐड किए, जैसे कि होम डिलीवरी है ग्रोसरी की, और सीनियर्स एप्रिशिएशन बारबेक्यू वगैरह है। और आज हम यहाँ पे तमाम वॉलंटियर्स को अप्रिशिएट करने के लिए इकट्ठे हुए हैं और उनको हम लोगों ने कुछ अप्रिशिएशन के तौर पे उनके लिए हमने एक छोटा सा इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया था। तो बस बेसिक फंक्शन तो यही है कि मतलब हम लोग और एक दूसरे के नज़दीक आ जाएं और अपनी कम्युनिटी को सर्व करें जिस कम्युनिटी में हम रह रहे हैं। और इस तरह हमारे अब इस ऑर्गेनाइजेशन में मोर एंड मोर पीपल आर साइनिंग इन थ्रू फेसबुक, थ्रू फेस टू फेस, एंड नो it's just getting growing and growing. That's all. Thank you. थैंक यू सर। थैंक यू। इश्तियाक भाई को इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगा, हमारे वॉलंटियर हैं, पहले दिन से हमारे साथ इन्वॉल्व हैं ऑर्गेनाइजेशन में। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इश्तियाक है जी, और पहले दिन से मैं इस ऑर्गेनाइजेशन में इन्वॉल्व, लेकिन उस तरह नहीं हूँ जिस तरह ये सब दोस्त हैं। कोशिश करता हूँ कि टाइम निकाल के आऊँ। और दूसरी बात यह कि हमने इस ऑर्गेनाइजेशन को देखा है कि बिल्कुल 2-4 बंदों ने ये स्टार्ट की और अल्लाह ताला का इतना फजल और करम हुआ कि ये जो है ना जितने भी दोस्त इकट्ठे हो गए और ये कारवां बनता गया। अब तो इतनी पॉपुलर है चिल्लीवैक में, मैं ये सोचता हूँ कि क्यों ना इसको और हम एक्सपेंड करें। और जो कि मैं देख रहा हूँ कि ना सिर्फ कि हमारी यूथ है उसको इसमें इन्वॉल्व किया जाए, और बल्कि हमारे अपनी फैमिलीज़, हमारे अपने बच्चे ये सारे इससे बेनिफिट ले रहे हैं। और ये एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव था। मैं अप्रिशिएट करता हूँ ज़ीशान को जिसने ये सुजेस्ट किया, और बाकी दोस्तों को भी जो इसमें कंट्रीब्यूट करते हैं। और मैं कोशिश करूँगा कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीब्यूट करूँ, अपने बच्चों को भी इन्वॉल्व करूँ। और ये ना सिर्फ ये पाकिस्तानियों का तोहफ़ा है, बल्कि इसके अलावा ये ऑर्गेनाइजेशन जो है ना एक एज ए ओवरऑल कम्युनिटी के अंदर भी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है। बहुत से दूसरी कम्युनिटी के मेंबर जो है ना वो बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। और देखते देखते और मेरी बात होती रहती है उधर मेरी अपने कोलीग्स के साथ, वो कहते हैं कि हम भी इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। और इसमें एक अच्छी बात है, ये फ्लेक्सिबिलिटी है, जो बंदा जिस वीक में आना चाहे वो इसमें कंट्रीब्यूट कर सके। डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं और इंशाल्लाह हम और भी जो है ना इसको और भी बढ़ाएंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू। हमारे बहुत ही ख़ास सुहेल भाई जब से चिल्लीवैक आए हैं हमारे साथ इन्वॉल्व हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और ऑलमोस्ट सारे प्रोजेक्ट्स में हमारे साथ साथ होते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हाँ, मैं रिसेंटली इस एरिया में मूव हुआ था और बहुत अच्छा लगा है यहाँ पे इन लोगों का काम। जिस तरह ये लोग मिल के काम कर रहे थे हम भी उसमें इन्वॉल्व हो गए। पहली दफ़ा कनाडा में आके हम इस तरह कम्युनिटी वर्क में एक्टिवली इन्वॉल्व हुए हैं। और एज ए इमिग्रेंट जिस तरह कैनेडियन गवर्नमेंट एक्सपेक्ट करती है कि हम इमिग्रेंट्स आके सोसाइटी का हिस्सा बने और उसमें पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट करें, तो मेरे ख़्याल में ये उसकी एक बहुत अच्छी मिसाल है। ना सिर्फ मुआशी तौर पे बल्कि हम सोसाइटी लेवल पर भी बहुत अच्छा उसमें घुल मिल गए हैं और सोसाइटी को पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। और सोसाइटी को जो है जो उसके ऐसे तबके हैं जो ज़रा पीछे रह गए हैं उसको हम अप्रोच करके उसकी हेल्प कर रहे हैं। हमने जब ये स्टार्ट किया था, जैसे सब ने बताया है आपको, हमने इतना सच बात यह है कि ख़ुद भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि हमें इतनी ज़्यादा इसमें सक्सेस मिलेगी। लेकिन अल्लाह ताला की बड़ी मेहरबानी है कि जहाँ पर आज हम खड़े हैं हमारे साथ हमारे लोकल कम्युनिटी मेंबर्स भी इन्वॉल्व हैं, हमारे प्रोजेक्ट्स बढ़ते जा रहे हैं। हमारे पास सब कम से कम 150 से ज़्यादा वॉलंटियर साइन अप हुए हैं जो लोकल चिल्लीवैक के हैं। एंड कीपिंग इन माइंड चिल्लीवैक इज़ अ स्मॉल टाउन, इट्स नॉट अ वेरी बिग सिटी। और आस्ता आस्ता हम आगे जाते जाएंगे, हमारे प्रोजेक्ट्स बढ़ते जाएंगे। हमारा बड़ा इवेंट आ रहा है क्रिसमस के ऊपर जो हमने इरादा किया हुआ है कम से कम 150 से 200 फैमिलीज़ को ग्रॉसरी डिलीवर करने का। और वो मैं होप करता हूँ कि नवीद भाई आएंगे और हमें उस पर कवर करेंगे। और इंशाल्लाह विल कीप आवर बेस्ट टू कीप दिस रनिंग इंशाल्लाह। और ये मैं आखिर में ये कहना चाहूँगा कि मैं अक्सर सुनता हूँ लोग कहते हैं कि यार इस्लामोफोबिया के अगेंस्ट कोई बात होनी चाहिए। मेरी अपनी ज़ाती राय शुरू से ये है और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे सारे दोस्त मेरे साथ उस पर एग्री करते हैं कि इस्लामोफोबिया के अगेंस्ट फ़ाइट आपने मस्जिद को अलग करके नहीं करनी है। यू नीड टू परफॉर्म विद इन द कम्युनिटी और लेट पीपल डिसाइड कि हम क्या कर रहे हैं। अगर मैं अपने गले में टैग डाल दूँ और मैं कहूँ कि मैं मुसलमान हूँ, मैं पीसफुल हूँ, आई डोंट थिंक दिस विल मेक एनी डिफरेंस।
मैं चाहता हूँ कि लोग आके मुझे कहें कि अच्छा आप मुसलमान हैं और आप ये सर्व हमारे लिए कर रहे हैं, दैट्स द मेन थिंग। तो हमारा मोटो बड़ा सिंपल है, वी सर्व द कम्युनिटी वी आर लिविंग इन, और इंशाल्लाह इन अ लॉन्गर रन दिस विल फ्रूट, ये बड़ा फ्रूटफुल होगा हमारे बच्चों के लिए भी, और दिस टू बी द ट्रू फाइट अगेंस्ट इस्लामोफोबिया।